Hello everyone, myself Archana Palandurkar. Again I am here with the new video that is based on ecosystem chapter. As you know, we are started the second chapter ecosystem in 11th standard. 11th standard EVS में हमने second chapter शुरू किया है, that is ecosystem. Under that ecosystem, this is our next video based on dynamics of ecosystem. Here dynamic is quite different word, but dynamic in the simple form we can explain dynamic means energy flow from one form to the another form. ठीक है, तो dynamics of ecosystem means what? When the energy is produced by the producer, it is transferred to the next generation or next form. When consumer consume that producer, that energy generated by the producer is transferred to the consumer. ठीक है, तो एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, दैट इज द डायनेमिक्स ऑफ द इकोसिस्टम. इसका एक ही कंसेप्ट है, द एनर्जी कैन नॉट बी रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मीन्स सनलाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी, सनलाइट सोलर एनर्जी, सनलाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर provides energy to the primary consumer. ठीक है, but this primary consumer cannot return the energy to the producer, and those producer cannot able to return the energy to the sun. यहाँ पे एक ही कंसेप्ट है डायनामिक्स का कि वो रिटर्न नहीं होगी, रिवर्स नहीं होगी. यहाँ पे एनर्जी फ्लो ट्रांसफर फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म, बट it cannot be reversed. ठीक है, this is the dynamics of ecosystem. Under this dynamics of ecosystem we have to learn several topics, 5 to 6 topic है, but today I am going to complete only 2 topic क्योंकि time limitation है. तो first one is the food chain and second one is the food web. ओके, सो फूड चेन बहुत ही कॉमन लगता है हमको टॉपिक, एज वी आर ऑलवेज स्टडिंग द फूड चेन. सेवरल टाइप्स ऑफ फूड चेन्स आर देयर इन आवर एटमॉस्फेयर, देयर इन आवर अर्थ. Food chain, the name itself suggests it is a chain formed by the food transfer from one form to the another form, and that's why it is called as a food chain. ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत पहले से फूड चेन पढ़ी हुई है, तो मैं उसको शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो दिस इज अवर वन टाइप ऑफ फूड चेन. एक सिंपल वाली हमने ली है फूड चेन. तो सोलर एनर्जी, first part of our food chain is producer क्यों है? Because it utilizes the solar energy. With the help of photosynthesis they produce their own food, and that's why they are known as an producer. Are consumed by the primary consumer. यहाँ पे producer में हमने grass या हम कोई भी plant ले सकते हैं. ठीक है, after that the primary consumer which consumes directly the producer, उनको हम primary consumer बोलेंगे. इसमें हमारा आएगा ये this is an हम उसको बोलेंगे grazing food chain है, ये grazing type का, इसलिए we are taken the example of grasshopper. ठीक है, primary consumer grasshopper, many types of insects, the rabbit, the deer, all those are the primary consumer. After that those primary consumer are consumed by the secondary consumer. ऐसे कंज्यूमर जो ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे. अभी रैबिट को कौन खाएगा? रैबिट को यहाँ पे आप जो स्नेक जो है वो खा सकता है, या अलग अलग टाइप के आप अलग अलग टाइप के फूड चेन में अलग अलग टाइप के सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे. तो यहाँ पे हमने फ्रॉग एंड स्नेक लिया हुआ है सेकेंडरी कंज्यूमर. देन द टर्शरी कंज्यूमर. इट इज नॉट नेसेसरी कि हर फूड चेन में सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर हो. इट मे पॉसिबल समटाइम देयर आर ओनली द सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर हो ही नहीं, सेकेंडरी कंज्यूमर में वो फूड चेन जो है वो कंप्लीट हो जाए. तो इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फूड चेन. ठीक है, तो secondary consumer here frog and snake are the secondary consumer. Then the tertiary consumer, here hawk is an tertiary consumer. hawk ऐसा bird है जो स्नेक को भी खा सकता है. तो हमने टर्शरी कंज्यूमर तक यहाँ पे लिया हुआ है. पॉन्ड इकोसिस्टम मैंने लास्ट टाइम लिया था, उसमें भी हमारा टर्शरी कंज्यूमर था. प्राइमरी कंज्यूमर उसमें प्रोड्यूसर थे एक्वेटिक प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्रोड्यूसर. प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपके आए थे जूप्लैंक्टन्स एंड द स्नेक
स्नेल, इंसेक्ट्स, वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर में आए थे। सेकेंडरी कंज्यूमर में फिर से आपका फ्रॉग, स्नेक, ये सारी चीजें आई थी। और टर्शरी कंज्यूमर में वहां पे क्रोकोडाइल, बिग फिशेस, वो सारी चीजें आई थी। तो ऑल दोज आर कनेक्टेड विद द डिकम्पोजर। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर फूड चेन, बट this all components are connected with the decomposers. कैसे? Because after the death of all those components, the decomposer works. It decomposes the each and every living component, and this component decomposers again gain back all the nutrients which is present in all those bodies are returned to the soil. ये producer कहाँ से आए? Soil से आए. Soil से producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. After the death of each and every component, this decomposer again return all those nutrients to the soil. ठीक है, सॉइल में पूरा डिकम्पोजिशन के बाद में द इनऑर्गेनिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म एंड इट इज अगेन गेन बैक टू द सॉइल. इन दिस वे दिस कंप्लीट साइकिल इज नोन एज ए फूड चेन. ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ फूड चेन जो है कुछ एग्जांपल्स हमको दिए हुए हैं. थ्री फूड चेन्स आर गिवन ओवर हियर. वैसे तो बहुत सारी है पर यहाँ पे 3 डिफरेंट दिए हुए हैं, तो वी कैन डिस्कस इट वन बाय वन. फर्स्ट वन इज द ग्रेजिंग फूड चेन. हियर ग्रेजिंग फूड चेन में आपका क्या आ रहा है? ये दिस इज एन ग्रेजिंग फूड चेन. ठीक है, जो हमने पढ़ी है अभी एग्जांपल, इट इज एन ग्रेजिंग फूड चेन. तो ग्रेजिंग फूड चेन में आपका ग्रेजिंग मीन्स व्हाट? ग्रासलैंड के ऊपर जो फूड चेन होगी. ग्रासलैंड में जहाँ पे सिर्फ घास है, तो वैसे लैंड का. दिस इज नॉट अबाउट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. हम उसको नहीं बोल सकते फॉरेस्ट फूड चेन, या हम उसको किसी नेशनल पार्क या सेंचुरीज जो है उसके साथ में इसको कंसिडर नहीं कर सकते. इट्स ओनली अ ग्रेजिंग फूड चेन. यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन में आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन से कंज्यूमर आएंगे? आपका आएगा वहाँ पे काऊ आएंगी प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है, क्योंकि वो हर्बीवोर्स है. तो ग्रेजिंग फूड चेन में वेराइटी हो जाएगी. यहाँ पे हमने ग्रास हॉपर लिया था, बट काऊ कैटल, सारे कैटल जो है दोज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन. उसके बाद में पैरासिटिक फूड चेन. पैरासिटिक फूड चेन इज डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन. हियर द पैरासाइट्स आर totally depend on the bigger animal without giving any problem to the host. They are survive on the parasite. Lice are the example of parasitic food chain. Lice are spend their whole life, or they are totally dependent on so many herbivorous plant. So many herbivorous animal. Then third one is the detritus फूड चेन. यहाँ पे दिस फूड चेन स्टार्ट्स विद द डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर मीन्स टेक एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट. इन द फॉरेस्ट so many leaves are fallen and so many twigs of plants are there throughout the forest, and small insects or animals, earth animals हम उसको बोल सकते हैं. for example snails are there, earthworms are there. those animals, grasshoppers are there. those animals broken down those leaves into smaller form, and then the decomposer work on that smaller dead and decaying matter and convert that dead and decaying inorganic form into the organic content. That is the detritus food chain. ठीक है, तो those all are the type of food chain. Now I am going to show you some examples of food chain. First one is the grass food chain जो हमने ली थी. grass, grasshopper, lizard, hawk. After that grass, hare, snake, hawk. Then the pond as an ecosystem, phytoplanktons, zooplanktons, fishes, kingfisher. After that green plants, spotted deer, tiger, dead bodies, decomposition, and organic and inorganic substances. So this is a diagrammatic representation of different kinds of food chain. After that the next part is food web. Next one is the food web. Food web means web of food chain. Basically, when several kinds of food chain work in a proper manner, means in a for example in a forest, several kinds of animals are present in the forest, and they are
परफॉर्मिंग देयर लाइफ साइकिल इन अ पर्टिकुलर मैनर. पर्टिकुलर मैनर मीन्स ऐसा कभी नहीं होगा कि टाइगर ने कभी घास खा ली, कि उसको कुछ शिकार नहीं मिला. ऐसा कभी नहीं होगा कि डियर ने कभी कोई एनिमल की शिकार कर दी. उनका एक अपना ही लाइफ साइकिल जो है, वो फूड चेन जो है वो चलते रहता है. एंड सो मेनी फूड चेन्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ वेब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट इज अवर फूड चेन. Food web. So look at the diagrammatic representation of food web. This is our diagram of food web. In this diagram you can see the green plants are eaten by the rabbit, rat and goat. After that jackal, wildcat, owl, lion, kite and snake. Means different food chains are working in the same manner or working with the proper manner, and that is the फूड वेब. तो फूड वेब में हम लोगों को बहुत सारे एनिमल्स जो है वो एक साथ काम करते हैं, एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस और इकोसिस्टम बैलेंस. ठीक है, जब तक फूड वेब प्रॉपर काम नहीं करेगा तब तक बैलेंस मेंटेन ही नहीं कर सकते हम. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेब ऑफ लाइफ और फूड वेब हम उसको बोलते हैं. आफ्टर दैट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम. एनर्जी फ्लो जैसे डायनामिक्स के बारे में मैंने बताया था, सेम है. एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम मीन्स एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सोलर एनर्जी टू द प्रोड्यूसर, आफ्टर दैट प्रोड्यूसर टू द प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर से बैक जा रहा क्या? नहीं, वहां से सिर्फ आपको ऑर्गेनिक कंटेंट मिल रहे हैं, बट एनर्जी कैन नॉट बी रिटर्न बैक. और ये आपको बहुत अच्छे से और समझेगा जब आप एनर्जी पिरामिड पढ़ोगे इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी. So properly watch the video till the end, and like the video, share the video, and if you are not yet subscribed the channel, please subscribe the channel, and thank you for watching this video.